Assalamu alaikum wa rahmatullah. So we have discussed the states of matter, five states of matter: solid, liquid, gas, and fourth is plasma. Fifth state of matter. It is Bose-Einstein condensate. हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी डिस्कस की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जो इंट्रोडक्शन हमने लिया है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी प्लाज्मा, हमने कल पढ़ा था। इट इज़ एक्चुअली द ionized gas. It exists in the form of ionized, the particles exist in the form of ionized gases, यानी they are, and the particles are this plasma state. It consists of super energetic and what is called super excited particles. ठीक, Bose-Einstein condensate is opposite to the plasma. It is Bose-Einstein condensate state of matter, which is super cooled. When gas of low density is cooled, super cooled, it is a new state is formed that is called Bose-Einstein condensate. ठीक, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें जो इस टॉपिक के बाद जो पढ़ना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसके लिए हमें चाहिए कि टेम्परेचर एक कंडीशन है जिसे हम स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। सो वन ऑफ द फैक्टर इज़ टेम्परेचर। सो इसके लिए हमें आज पढ़ना है ये, पहले हम जो स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स टेम्परेचर, ये हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा जो टेम्परेचर है, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब हमें लगता है फीवर है, थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं। ठीक, thermometers are the devices which are used for the measurement of temperature. They are used for the measurement of temperature। यानी कोई भी जो अगर आपको याद रखना है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जो दैट डिपेंड्स, उसको हम बोलते हैं दैट डिपेंड्स कॉन्सिस्टेंटली एंड रिप्रोड्यूसिबली ऑन टेम्परेचर। कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, कॉन्सिस्टेंटली एंड रिप्रोड्यूसिबली डिपेंड्स टेम्परेचर, दैट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज द टेम्परेचर ऑफ एज द बेसिस ऑफ थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर जब हमें डिज़ाइन करना है, बनाना है, इसके लिए हमें क्या कोई प्रॉपर्टी हमें ढूंढनी है जो डिपेंड होगी किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। यानी एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। हमें पता है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, चेंज करते हैं, इनका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। यानी अगर गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, गैस का जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, इट्स वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज्ड। सो इट इज़ द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। यानी इससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं थर्मोमीटर। यानी जो थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे बना है। यानी दिस प्रॉपर्टी यानी वॉल्यूम इंक्रीजेज विद टेम्परेचर volume increases with temperature for most substances. This property is the basis for the original this mercury thermometer. It is called clinical thermometer, mercury thermometer। यानी मरकरी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जब टेम्परेचर मरकरी एक्सपेंड होता है, वही इसी से इसका वॉल्यूम बढ़ता है। उस हिसाब से ये मेजर करते हैं हम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बाकी जो है प्रॉपर्टी, बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, अदर प्रॉपर्टीज़
can be used to measure temperature. They include हम आगे क्लास आगे हायर क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैं, कलर हैं, एंड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड जो हम आज यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, एमिशन ऑफ इंफ्रारेड जो आज हम यूज़ करते हैं। कोविड जो जब से आया है तब से डॉक्टर्स जो हैं या हर एक इंस्टीट्यूशन में अपना वो होता है इन दिस इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड रेडिएशन से भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर टेम्परेचर। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑन बाय विच द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, यानी thermometers can be designed. So this is about thermometers. अब from time to time different scales of temperatures have been designed for measuring temperature. Three most important scales are Fahrenheit, Celsius and Kelvin. These are three most important scales of temperature, scales of measuring temperature. Fahrenheit इसमें F इसमें डिग्री होती हैं, F डिग्री, सेल्सियस इसको इट वाज अर्लियर नोन एज सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल, एंड केल्विन। केल्विन को डिग्री नहीं लगाते हैं यहाँ, केल्विन इसको यहाँ डिग्री नहीं लगाते, ठीक। सेल्सियस को लगाते हैं, फारेनहाइट को लगाते हैं, केल्विन को नहीं लगाते हैं, ठीक, ये याद रखना है। सो दीज आर द थ्री स्केल्स। और एक स्केल है रैनकाइन स्केल है जो यहाँ यूज़ नहीं होती, यूएस में यूज होती हैं, रैनकाइन स्केल। जो हम पढ़ने जा रहे हैं फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन स्केल के बारे में, ठीक। दीज आर थ्री पॉपुलरली यूज्ड स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। फर्स्ट जो है अगर हम जो यूज़ करते हैं यहाँ सेल्सियस स्केल, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर इज़ द freezing point water is taken as 0 degree Celsius and boiling point of boiling is taken as 100 degree Celsius. In यानी जो ये है सेल्सियस थर्मामीटर, it is calibrated from 0 degree to 100 degree Celsius. Second is Kelvin, and second is Fahrenheit scale. And the freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit, and the boiling point is taken as 212 degree Fahrenheit. So therefore the thermometers जो Fahrenheit thermometers they are calibrated, they are calibrated from 32 degree to 212 degree Fahrenheit. So this is about Fahrenheit degree scale. Third is Celsius scale. Kelvin scale. Kelvin scale is, Kelvin जो हमें पता है, Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin is the SI unit of temperature. It is denoted by K, capital K. यहाँ पर डिग्री ऑफ साइन है, यहाँ ये यूज़ नहीं होता, इट इज़ नॉट यूज इन केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस। इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 273.15 या 0.16, हम 273 डिग्री केल्विन लिखेंगे, 0.15 नहीं लिखते हैं यूजुअली, ठीक। मगर जो अगर कैलकुलेशन हमें करने हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन, हमें फिर यही लिखना है 273.15 और 273.16, ठीक। 273 Kelvin is the freezing point of water, while as boiling point is 373 degree, Kelvin, not degree. So Kelvin scale है, it is regarded as the best scale for measurement of temperature because it has no नेगेटिव वैल्यू। यही इसका जो एडवांटेज है, इट हैज़ नो नेगेटिव वैल्यू। जो ये स्केल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी हम स्केल जो सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा,
ठीक, जिसके लिए रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखना है। रिलेशन क्या है ये हम कल पढ़ने जा रहे हैं। जो फ़ारेनहाइट हैं यहाँ आप नज़र डालिए, ठीक। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। जो फ़ारेनहाइट स्केल हैं ऊपर, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। इसका सेल्सियस स्केल का 0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाइल एज freezing point of freezing water in Kelvin scale is 273 degree, 273. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल, while in Kelvin scale it is 310.15. Similarly, boiling point of water is 212 in Fahrenheit, 100 degree Celsius in Celsius scale, and 373 और 370.15 डिग्री इन केल्विन। जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ absolute zero. It is the coldest temperature which can be measured, that's absolute zero. Absolute zero हो गया 0 केल्विन, absolute zero हो गया 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन इट्स कॉल्ड 0 absolute zero. इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है इन सेल्सियस स्केल दैट इज़ -273.15 को हम कल पढ़ने जा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस केल्विन। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो in terms in Fahrenheit scale is -459.67 degree Fahrenheit. This is introduction about this scale, different scales of टेम्परेचर। अगर आप याद रखोगे जो डिज़ाइन कब किया है, जो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले जो फ़ारेनहाइट स्केल इसको डिज़ाइन किया है, फ़ारेनहाइट इसको इट वाज डिज़ाइनड बाय दैट इज़ कॉल्ड Daniel, that is called Daniel Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, in the year 1724. It is designed by Daniel Gabriel Fahrenheit, the 18th century in 1724. जो next scale है Celsius scale, it was also called centigrade scale. It was designed by Swedish scientist that is called Anders Celsius in 1742. 1742. दो थर्ड वन जो है that is called Kelvin scale, after the name of Lord William Kelvin. It was designed by him in 1848. He was a British scientist. फोर्थ स्केल जो यूज़ होती हैं वो कम यूज़ होती हैं, यहाँ किसी कंट्री में होती हैं, यूएस में कहीं फील्ड में ये यूज़ होती हैं, हर जगह नहीं होती हैं। रैनकाइन स्केल, इट वाज इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 491.5 और 6 डिग्री Rankine, and your boiling point of water है BPT, that is 671.67. ये हम आपको याद नहीं रखना है, मगर अगर ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, फिर भी मैंने ये बोला यहाँ Rankine scale is the fourth scale which is used in US in some departments, engineering departments, Rankine scale. So this is about the scales of temperature. कल हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, और इनको केल्विन में कैसे ट्रांसफ़र कैसे मेजर कर सकते हैं। और एक पॉइंट है नेगेटिव टेम्परेचर। अगर ये सेल्सियस स्केल है, इफ इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्राम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, सो हम जब मेजर करते हैं -7 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आता है,
-7 अगर नेगेटिव टेम्परेचर हमें यूज़ ये करना है मेजर, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक, इस स्केल से, ठीक। दीज आर सम क्वेश्चंस विच वी डिस्कस in next video. So thanks.